Good morning and welcome everyone to the class. This is your teacher, your mentor, your friend, Dr. Sumit Tellewar, welcoming you to our maiden time, that is 12 noon every day these days. And we are having classes of forensic medicine. ये जो YouTube का चैनल आपके पास में आ रहा है, which has been backed up by Unacademy, और उस पे हम पिछले तकरीबन 2 महीनों से लगातार एवरी डे लाइव आ रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टीचिंग इज टू enable and empower all the students in the subject of forensic medicine so that they are not only well versed with the subject but their attempt of the subject in their respective professional exams, plus all those students who are seeking or who are aspiring for MD MS upcoming entrance exam, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो PGI का हो, चाहे वो नीट का हो, उसके लिए भी फोरेंसिक के MCQs में टफ हो जाएं, उसके MCQs को अच्छी तरह से समझ लें और नॉट ओनली MCQs, फोरेंसिक के कॉन्सेप्ट्स को भी इतनी अच्छा तरीके से समझें so that this subject is in your grasp. Okay, and with this context we meet every day these days at 12 noon, and our only motto is that each and every student on this who is watching or viewing this YouTube channel shall be enabled and empowered to take the subject wholeheartedly and be able to understand the aspects and the concepts of the subject well. Okay, so उस context के साथ में आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है? We are on our special MCQ session today, और हमारा MCQ session number 20 है आज. So we have had 19 special MCQ sessions earlier, and today in MCQ session number 20 we are going to discuss questions of toxicology. So toxicology का first MCQ session है, otherwise in general this is MCQ session number 20. Okay, all those listeners जो इस वीडियो को आज शायद पहली बार देखेंगे या फिर यहाँ से ये YouTube चैनल देखना चालू करेंगे, आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. My name is Dr. Sumit Tellewar and I'm MD in Forensic Medicine. I completed my graduation about 16-17 years back, and since then मैं actively engaged हूँ UG and PG teaching में. Not only that, I'm actively engaged in teaching of MD MS NEET aspirants also, and इस पूरी journey में there have been wonderful experiences that I have gained some wonderful feedbacks, and जो students ने पिछले काफ़ी सालों में feedback दिया है about how forensic questions are being coming in the examinations, किस तरीके से trend change हो रहा है, किस तरीके से questions की difficulty बदल रही है, वो feedback मुझे help करता है to design the teaching material for the upcoming students. ओके, और वो सारा जो लेखा जोखा है, जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वही लेकर के मैं आपके पास रोज आता हूँ टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू, सो दैट दैट एक्सपीरियंस बेनिफिट्स यू इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. अगर आप मुझसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सेंड अ क्वेरी टू मी, इफ़ यू वांट टू सेंड अ सजेशन टू मी, काइंडली डू नॉट हेजिटेट टू लिंक विद मी एट टेलीग्राम ऐप. फॉर दिस यू नीड टू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप in your phone or any other handheld device that you use, and then follow this simple lead which is livedaily.me/neetpg, and you could be connected to me, and then we can share any queries, any suggestions, or what could be improved so that your prep for the upcoming examination is up to the mark.
Now, this interface on which we are holding this sharing of knowledge is provided by Unacademy. Unacademy is one of the foremost and one of the brilliant solutions right now, particularly in the ongoing times of this pandemic, where a student can prepare for his examinations very wonderfully well, sitting in the comforts of his home or any other comfortable zone जहाँ पर स्टूडेंट है. अनअकैडमी ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, जो कि होता है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन. अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत सारे एंट्रेंस और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अनअकैडमी का नीट पीजी का सब्सक्रिप्शन, and Unacademy does have a NEET PG subscription also, where a student can join the ongoing batch of Unacademy. They can join the upcoming batches and then वो engage हो सकता है अपनी NEET PG की प्रिपरेशन में. बहुत सारे unparalleled benefits हैं Unacademy के सब्सक्रिप्शन में as compared to any other preparatory subscription that a student may want. लाइव क्लासेस हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं विद एजुकेटर, लाइव पोल सिस्टम्स होता है लीडर बोर्ड के साथ में, जो एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस देता है रियल टाइम एमसीक्यू सॉल्व करने का. एंड देन नॉट ओनली इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग रियल टाइम एमसीक्यूज, बट इट ऑलवेज आपकी प्रैक्टिस कराता है कि किस तरीके से आप जल्द से जल्द एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ. बिकॉज एग्जामिनेशन में व्हाट मैटर्स इज नॉट ओनली आंसरिंग द राइट क्वेश्चन but also in lesser amount of time. Okay, टेस्ट सीरीज है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. रियल टाइम लाइव डाउट क्लियरिंग होती है एक स्टूडेंट की अपने एजुकेटर के साथ में. और इन सारे अनपैरेलल्ड सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा आप कहाँ से मिलता है आपको? राइट इन योर पॉकेट, बिकॉज यू जस्ट नीड टू टेक आउट योर फोन एंड स्टार्ट योर प्रेप. किस तरीके से अभी बताऊंगा, पर अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो स्पेशल क्लासेस में. स्पेशल क्लासेस आर क्लासेस डिजाइंड एंड delivered by Unacademy educators, which are absolutely on the platform of plus classes. बिल्कुल उस तरीके से होती हैं जिस तरीके से आपका प्लस का क्लासरूम चलता है. ये स्पेशल क्लासेस होती हैं फ्री, यानी कि स्टूडेंट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर के ये स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकता है. एंड दीज क्लासेस ऑल्सो हैपन लाइव, यानी कि आप लाइव एक्सपीरियंस भी ले सकते हो कि आपका प्रिप मॉड्यूल किस तरीके से जाएगा. बट अगर आप कोई और स्पेशल क्लास देखना चाहते हो जो पहले निकल चुकी है, दोज वीडियोज आर ऑल्सो अवेलेबल देयर. सो डू गो एंड वॉच दी स्पेशल क्लासेस. ओके, आप वहाँ पर जाओगे, आपको मेरी भी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस दिखाई देंगी. इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर समवन जो इस समय फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहा है, ही इज़ प्रिपेयरिंग द फोरेंसिक मेडिसिन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, यू कैन ज्वाइन दो स्पेशल क्लासेस. हम अगली आने वाली दो स्पेशल क्लासेस करने वाले हैं नीट के रिकॉल फोरेंसिक मेडिसिन क्वेश्चंस के, एंड फॉलोड बाय एम्स के रिकॉल फोरेंसिक मेडिसिन क्वेश्चंस के. सो कम ओवर ऑन टू दैट प्लेटफॉर्म एंड सी एंड ज्वाइन स्पेशल क्लासेस. ओके ओके, स्पेशल क्लासेस के बाद अपने आप को आप जब नहीं रोक पाओगे और आप ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, दो चीज़ों का ध्यान रखना. सब्सक्रिप्शन लेना 12 महीने या फिर 24 महीने का, क्योंकि ये बल्क सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं और आपको कमिट कराते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन अपने गोल में कमिट हो जाइए. सेकंड, ये आपके एजुकेटर को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो लगातार आपको 12 या 24 महीने मेंटर कर पाएँ ताकि आपका गोल आपके लिए इजीली अचीवेबल हो जाए. And second thing, do not forget to use my referral code, which is DRSUMITLIVE
while buying your plus subscription, that will gain you another 10% of discount. ठीक है, इस तरीके से बड़े क्लियरली, बड़े इजीली आप अनअकैडमी की प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो. ओके, आज का जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो सेशन है दैट इज एन MCQ सेशन, एंड आज हम करने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी के 8 क्वेश्चंस. These questions will be representing from the areas of general consideration in toxicology, and some questions will be based upon the agricultural poison, the organophosphorus groups and all. Okay, कल हम करेंगे टॉक्सिकोलॉजी सेशन नंबर 2, जहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे. So let's begin with picking up question number 1, and as you can see on the board, question number 1 itself is a picture बेस्ड क्वेश्चन. ओके, आपको क्वेश्चन में एक पिक्चर दिख रही है और इस पिक्चर पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. द क्वेश्चन इज द इमरजेंसी प्रोसीजर डन विद दिस इंस्ट्रूमेंट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन. ओके, सो द पिक्चर दैट यू सी ऑन द बोर्ड, इस पिक्चर के साथ में जो इमरजेंसी प्रोसीजर किया जाता है वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस सिनारियो में होता है? दिस इज द क्वेश्चन. द आंसर्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग. एंड द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग. ओके, नाउ व्हाट द इंस्ट्रूमेंट दैट वी सी इन द पिक्चर is called as Ewald's tube. Okay, is called as Ewald's tube. The standard length of this tube is 1.5 meters. Okay, as you can see, this tube is orange in color and it is made up of rubber. Okay, so ये कुछ ट्यूब की peculiarities हैं जिसके बारे में हमें याद रखना है. This tube is called as Ewald's tube, which is 1.5 meter in length. That is the standard dimension. Orange in color and the tube is made up of rubber. This tube is used for the purposes of conducting gastric lavage. Okay, so ट्यूब किस काम आती है? ट्यूब काम आती है गैस्ट्रिक लवाज करने के लिए. नाउ इफ वी गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ गैस्ट्रिक लवाज, आपको दिखाई देगा गैस्ट्रिक लवाज के बहुत सारे contraindications होते हैं. Most of the contraindications of gastric lavage are only relative contraindications of gastric lavage. For example, if the patient comes to you in status epilepticus और कोई poisoning की history है, can you do gastric lavage? No, because right now the person is in status epilepticus. So what you need to do is control the condition and sedate the patient and do the gastric lavage. So you can do the gastric lavage. So that condition, which was the medical condition of the patient, only is a relative contraindication. Then if the patient is comatose, gastric lavage may not be able to be done because he may aspirate. So what we need to do is we just need to intubate the patient with cupped endotracheal tube. That will prevent any aspirations going into the windpipe, and then you can do gastric lavages. Similarly, there are some more relative contraindications where the condition which is providing the hamper, which is hindrance to gastric lavage, can be taken care of, and then gastric lavage can be done. But one of the absolute contraindications of gastric lavage is inorganic acid poisonings, where the most strongest poisoning is by sulfuric acid. Okay, so sulfuric acid ingestion is one of the only absolute contraindication of doing gastric lavage. ठीक है,
ऑर्गेनिक एसिड लाइक ऑक्सैलिक एसिड या एसिटिक एसिड पॉइजनिंग के केसेस में गैस्ट्रिक लवाज कंपैरेटिवली करा जा सकता है बिकॉज they are lesser virulent on the GI tract. There is no fear of impending perforation. Carbolic acid की केसेस में गैस्ट्रिक लवाज इज एडवोकेटेड. ओके, रादर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता वो भी नहीं देखना हमने. इट इज रादर एडवोकेटेड बिकॉज कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग की जो कोरोजन होती है दैट इज इट स्वेल्स द स्टमक म्यूकोजा. कार्बोलिक एसिड स्वेल्स the stomach mucosa. The appearance in this case of the stomach is called as leathery stomach. So कार्बोलिक एसिड के पॉइजनिंग में स्टमक जो होती है उसका लेदरी अपीयरेंस होता है, उसका लेदरी टेक्सचर भी होता है. सो देयर इज नो फियर ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन. तो गैस्ट्रिक लवाज आराम से किया जा सकता है. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. एज यू कैन सी अ पिक्चर हैज बीन शोन टू यू एंड इन द पिक्चर व्हाट सीन इज अ रेड कलर, a tear is flowing out of the eye. Okay, the color is red and the question is simple. The condition is seen in. The question is, the condition is seen in. A red color tear flowing out of the eye. The condition is seen in. The answer in this case is organophosphorus poisoning. The answer is organophosphorus poisoning. This condition is called as chromolacry. 1 minute. The condition is called as chromolacryuria. Chromo means color, lacry means tear, and uria means flow. So flow of colorful tear. See what happens in organophosphorus group poisoning. These compounds, they interfere with porphyrin metabolism. As a result, some intermediate metabolites of porphyrin are accumulated in lacrimal gland. Okay, and in organophosphorus toxicity, the lacrimal secretion as it is increased because of the cholinergic muscarinic effect. So these metabolites are excreted with tears and they impart red color to them. Okay, so what happens is organophosphorus compounds, they interfere with porphyrin metabolism. As a result, some intermediate metabolites of porphyrins, they get accumulated selectively
in lacrimal glands, and lacrimal secretion is as it is increased in organophosphorus poisoning because of the cholinergic effect. And so these products, they also come out with these tears, and these products, because they are being colored products, they impart color to the tear, which is called as red chromolacriuria, or also known as red tear syndrome. Okay, so remember, red tear syndrome or chromolacriuria is a condition that may be seen in people who are moderately to severely affected or exposed to organophosphorus poisoning. It is not seen in mild exposures. Okay. Okay, let's move further and let's take up our next question, which is question number 3. Question number 3 is the drugs which are poisonous are categorized in which schedule of drugs and cosmetic rules? Okay, the answers are, or option are, schedule F, schedule C, schedule E1, or schedule H. Okay, now we need to remember the important categories of scheduling drugs or compounds in drugs and cosmetic rules under the Drugs and Cosmetic Act. So ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं उसमें शेड्यूल्स बने हुए हैं, एंड कौन सी ड्रग को या कंपाउंड को किस कैटेगरी में शेड्यूल किया जाता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो हैं, शेड्यूल सी, एज यू कैन सी, शेड्यूल सी में प्लेस मिली है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स को. ओके, सो ऑल द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इन शेड्यूल सी of drugs and cosmetic rules. Then schedule E1 has the place for poisonous substances, जो कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा. All the poisonous substances or poisonous drugs, they are categorized in schedule E1. schedule F में जगह है वैक्सीन्स की, एंटीसीरा की, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस की. ओके, सो एफ में है वैक्सीन्स, एंटीसीरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस. देन शेड्यूल जी विच आर ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, वो सारी कैटेगराइज की गई हैं शेड्यूल जी में. शेड्यूल एच ड्रग्स विच आर ओनली टू बी गिवन ऑन प्रिस्क्रिप्शन. ओके, and then schedule J, it contains list of all the diseases for the cure of which no drug is to be advertised. Okay, like HIV. Fine, तो ये कुछ शेड्यूल्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी ड्रग किन शेड्यूल्स में कैटेगराइज करी हुई है. इन शेड्यूल्स में जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, they are schedule E1, as you can see, schedule E1 because it holds all the poisonous substances. Then we have schedule J, याद रखिएगा, because it contains name of all those diseases for which no drugs are to be advertised. Okay, and then of course schedule H is important because it contains list of all the drugs which are only to be given
ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि इनकी ओवर द काउंटर कोई सेल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज बाकी कैटेगरीज से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे सीम टू बी कैरिंग some important drugs listed in them. Remember E1, H and J. E1 में poisonous substances, H में drugs on prescription, and J में those diseases for which the cure of which drugs are not to be advertised. Okay, चलिए, so if we go back to our question, the correct answer in this case would be option number C, that drugs which are poisonous are categorized in schedule E1. Okay, let's move ahead and let's take up question number 4. Question number 4 is, Mr. Rajesh has been intoxicated forcibly without consent in a party. Okay, so somebody would have played a prank, or somebody might have forced him to be intoxicated, but now the condition is that we know that Mr. Rajesh has been intoxicated forcibly. He becomes angry and leaves the party because of that force that he has to face. While driving back, he crashes his car to another, and another person suffers injury. Mr. Rajesh is protected under which IPC? The question is, he is protected under which IPC if he has been intoxicated and driving the car? Okay, the question although tells us that his intoxication is a forcible intoxication. Okay, so it's a forcible intoxication. Fine, and this protection is given to people who are forcibly intoxicated, that they may not be responsible for their act if this is the scenario, is given in section 85 of IPC. Okay, let's try and take a look on all the important IPC sections which are related to some kind of poisoning. So heading मैं इसकी देता हूँ poisoning or intoxication related IPC. Okay, we start with an IPC which is section 85. Section 85 is voluntary intoxication. Okay, and what does it say? That if a person 85 is about involuntary intoxication. It says that if a person is involuntarily intoxicated, then he is not responsible for his actions. Whereas the next section, which is section 86, it talks about voluntary intoxication, and it says that if a person has consumed any intoxicating substances voluntarily, then he may be taken responsible for his action as if a normal person would have done it. यानी कि अगर उसका एक वॉलंटरी इनटेक है, तो अगर वो उस वॉलंटरी इनटेक और इंटॉक्सिकेशन में कोई एक्ट करता है जिसकी वजह से कोई क्राइम हो जाता है, he will be treated responsible for it. बट इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, but he has to prove involuntary intoxication in the court of law. That's the important thing. Okay, कुछ और IPCs जो पॉइजनिंग से रिलेटेड है वो क्या है देख लेते हैं. सेक्शन 274, it provides punishment for adulteration of drugs. The punishment is 6 months of imprisonment. Then we have section 275, which is the next one. It provides punishment for sale of adulterated drugs. Okay, इसकी भी सजा 6 months of imprisonment तक हो सकती है. So 274, 275 adulteration of drugs और फिर उनको बेचने, दोनों की सजा 6-6 महीने हो सकती है. Then 276 is sale of a drug as a different drug, यानी कि
एक ड्रग को कोई और दवाई बता करके बेचना, इसकी भी 6 महीने तक की सजा हो सकती है। Then 277 is fouling of a public spring or reservoir, punishable up to 3 months of imprisonment. Okay. Then 278, making atmosphere noxious to health for people around, rupees 500 fine. So 274, 5, 6, 7, 8 ये सारे IPCs related हैं any kind of intoxication और drug adulteration और environmental adulteration की punishment के लिए। ओके, सो ये भी याद रखें तो easy रहेगा। 274, 75, 76, 77, 78, okay, they are related to drug adulteration or environmental pollution by poisonous substances. Okay, the punishments are 6 months or 3 months of imprisonment. So punishment यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी important चीज़ है याद रखने के लिए। Okay, let's move on and now take up our question number 5. So question number 5 is that in a case of homicidal poisoning attempt, in a case of homicidal poisoning attempt, the patient is brought to the hospital. So there is a case of homicidal poisoning and the patient is brought to hospital. The doctor willfully does not preserve the gastric lavage sample of the victim to protect the perpetrator of the crime. The doctor will be punished under which section of IPC? The options are 193, 201, section 86 और section 302 और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 201। ओके, ऑल्दो हम इस सेक्शन को टॉक्सिकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं बिकॉज बहुत कॉमनली हो सकता है, बट दिस सेक्शन डज नॉट पनिश फॉर ओनली ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल नेग्लिजेंसेस और अदरवाइज नॉन प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स इन टॉक्सिकोलॉजी। देखते हैं पहले ये सेक्शन कहता क्या है। सेक्शन 201 of IPC punishes for any disappearance or destruction of evidences. Okay, if anybody is guilty of either causing a disappearance of evidence or the person is guilty of causing any destruction of evidence, okay, उसको सजा मिलेगी। The punishment here is imprisonment up to 2 years. ओके, अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, दैट डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ केस ऑफ अ सस्पेक्टेड होमिसाइडल अटेम्प्ट एंड टू सेव द पेशेंट ही डज कंडक्ट गैस्ट्रिक लवाज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दैट गैस्ट्रिक लवाज सैंपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू रिकॉल आवर लेक्चर, जब हमने बात करी थी what are the duties of a doctor in poisoning cases, we talked about two basic duties of the doctor. One is medical duty and the second is the legal duty. The medical duty is
treatment. And legal duty is preservation of evidence, informing police preparing for any dying declaration. तो ये कुछ लीगल ड्यूटीज भी हैं जो डॉक्टर्स को अपने ध्यान में रखनी चाहिए. एंड वेन एवर दे एनकाउंटर अ पेशेंट ऑफ पॉइजनिंग और एनी अदर पेशेंट, मे बी नॉट related to poisoning but seems to be a medico-legal kind of a scenario, doctor has to perform the medical and legal scenarios both, and every poisoning case is a medico-legal scenario. So doctor को दोनों चीजें तैयार करनी पड़ेंगी. and inside of that अगर डॉक्टर प्रिजर्वेशंस, essential preservations नहीं करता, वो भी जानबूझ के, because that will help somebody who is the suspect of the crime to be free because evidence preserve नहीं किए गए, then doctor becomes a party of helping the person out and may be punishable under section 2001, which punishes for destruction or disappearance of evidence. Okay, ये IPC बहुत सारे और सिनारियोस में लिंक हो सकता है जहां पर कोई व्यक्ति किसी और वजह से भी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस कर रहा हो. ओके, लेट्स टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज reversible inhibition of cholinesterase enzyme or inhibition of acetyl-CoA synthase or irreversible suppression of cholinesterases or defect in reuptake of acetylcholine from synaptic cleft. Okay, correct answer इस situation में है option number C, that the mechanism of action of organophosphorus poisoning is that it irreversibly suppresses enzyme cholinesterases, which is responsible for degradation of acetylcholine, which is the primary postsynaptic neurotransmitter in both sympathetic and parasympathetic pathways. एक क्विक नज़र मारते हैं एसिटाइलकोलिन की मेटाबॉलिज्म पे. एज यू कैन सी द स्लाइड शोज प्रेजेंस ऑफ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड here, and in the presynaptic neuron there is formation of acetylcholine. How choline is received into the neuron and is combined with CoA with relevant enzyme working for the coagulation, and thus acetylcholine molecule is formed. This acetylcholine molecule is liberated through the synaptic cleft outside. Okay, it's liberated through the synaptic cleft outside, and this goes and performs the action on the postsynaptic membrane, as you can see in the picture itself. So it works on the postsynaptic receptor and then do whatever intracellular response it has to produce. Okay, now whatever is the excess acetylcholine which is present in this area
ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, यहाँ पर जो भी एसिटाइलकोलिन के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होंगे उनका क्या होगा, क्योंकि अगर उनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो जो रिस्पॉन्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रोड्यूस हुआ है वो रिपीटेडली होता रहेगा, बिकॉज more and more of acetylcholine is present in the synaptic cleft, and that is taken care of by the enzyme which is acetylcholine esterases. Okay, choline esterases acetylcholine को पिकअप करके उसको एसिटेट और कोलिन में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एसिटाइल choline esterases enzyme है, they come to the membrane, they pick up the excess acetylcholine and they convert them into acetate and choline. The choline which is converted back is taken back from synaptic cleft into the presynaptic neuron, और वहां पर वो कोलिन दोबारा से कोए के साथ मिलकर के एसिटाइलकोलिन बनाता है, एंड द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग 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 गोइंग. ठीक है, ये साइकिल तब तक आराम से बॉडी में चलती रहती है जब तक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेसेस अपना फंक्शन कंप्लीट कैपेसिटी में करते रहते हैं. बट इफ देर इज समथिंग विच इज गोइंग टू सप्रेस acetylcholine esterases enzyme, then acetylcholine esterases will not be able to take up the extra acetylcholine present in the synaptic cleft and degrade them. As a result, cholinergic action होता रहेगा because acetylcholine का degradation नहीं हो रहा, and this is exactly what happens with acetylcholine esterases inhibitor, and one of the inhibitor is organophosphorus group. Organophosphorus group acetylcholine esterases को inhibit कर देता है so that it cannot pick up the acetylcholine which is available in excess in synaptic cleft, and उसका breakdown नहीं हो सकता, and so the victim experiences increased cholinergic symptoms. और increased cholinergic symptoms विक्टिम कैसे एक्सपीरियंस करेगा, जहां जहां पर एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा उस तरीके के सिम्टम्स होंगे. और वो एसिटाइलकोलिन कहां कहां पर एक्ट करता है, इट एक्ट्स थ्रू 3 रिसेप्टर्स, मस्करिनिक, निकोटिनिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीडिएटेड डायरेक्ट इफेक्ट. तो यहां पर इन रिसेप्टर्स के थ्रू ऐड करने की वजह से कोलिनर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं. दिस इज द होल फिजियोलॉजी ऑफ एसिटाइलकोलिन मेटाबॉलिज्म, एंड जो इनहिबिटर उसको इनहिबिट करने आ रहा है वो कैसे करता है. नाउ ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप is an irreversible inhibitor. ये बड़ा important है. It's an irreversible inhibitor. So once the organophosphorus compound inhibits the acetylcholine esterases enzyme, वो enzyme is irreversibly inhibited. वो reversible नहीं है. So the combination is not going to dislodge on its own. So if the organophosphorus group keeps the enzyme suppressed, then the enzyme which is being suppressed is going to die out. So it will need new protein synthesis for body to supply new more product copies of enzyme. So new protein synthesis को होना पड़ेगा. इसीलिए जब हमने वापस देखा तो हमने क्या कहा कि it is an irreversible suppression of cholinesterases. It's not a reversible inhibition. Reversible suppression भी होता है. ओके, रिवर्सिबल सप्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेसेस एंजाइम
is produced by organochlorines, carbamates, कंपाउंड्स. ओके, सो ये कंपाउंड जो होते हैं ये और कोलिनेस्टेसिस एंजाइम का रिवर्सिबल सेपरेशन करते हैं. यानी कि वंस दीज कंपाउंड्स दे बाउंड, कार्बोमेट कंपाउंड्स दे बाउंड टू कोलिनेस्टेसिस एंजाइम, they keep the enzyme separate suppressed for 12 to 24 hours, but then afterwards they leave the enzyme all by themselves. ये enzyme को खुद ही छोड़ देते हैं. And so after 24 hours the enzyme is free to start metabolizing the excess acetylcholine present in the synaptic cleft. So कार्बोमेट्स के साथ में रिवर्सिबल सेपरेशन होता है और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के साथ में इररिवर्सिबल सेपरेशन होता है. Okay, let's take up question number 7. The question is, a patient presented in emergency with severe exposure to organophosphorus compound. He is treated well and is stabilized. On third day, he suddenly complains of inability of opening of eyelids and difficulty in breathing. This condition is called as intermediate syndrome seen in organophosphorus toxicity. Okay, intermediate syndrome. What is intermediate syndrome seen in organophosphorus toxicity? Okay, intermediate syndrome. Hold on. See, intermediate syndrome is characterized by loss of muscle fibers. Loss means necrosis due to repeated muscle fasciculation during initial OPG exposure. Now this loss of muscle fiber is seen in smaller muscle groups, because smaller muscle groups, they tend to have small muscle fibers, and when the muscle fasciculations are happening, some of them may not be able to withstand them, and as a result, when the patient is stabilized, the small muscle start to show paralysis. Okay, this is commonly seen in first week post exposure.
ओके। सो इंटरमीडिएट सिंड्रोम क्या होता है, वो एक्सपोजर के पहले वीक में देखा जाता है। इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज पैरालिसिस ऑफ स्मॉल muscle groups. The reason is that during the initial exposure, the muscles which were in constant fasciculation because of excess acetylcholine present at the motor end plate, some of the muscle fibers got necrosed. So जो body की bigger और bulkier muscles होती हैं, they are able to withstand the excessive muscle contraction because their fibers have more bulkier, bigger, so they have more power. But small ones, they give up, and once the patient is stabilized, probably after second, third day, the muscles whose fibers have gotten necrosed, they start to show inability to perform action, which is paralysis. This is called as intermediate syndrome. Okay, so ये चीज हमें याद रखनी है organophosphorus के context में. Then last question for the day is delayed onset of polyneuropathy in organophosphorus poisoning is typically seen in. Okay, delayed onset of polyneuropathy भी होती है organophosphorus poisoning में, and it is typically seen in, the answer is 4 to 6 weeks. Okay, so अभी हमने थोड़ी लास्ट क्वेश्चन में देखा था एक पॉलीन्यूरोपैथी जो कि अर्ली ऑनसेट थी, जिसको हमने इंटरमीडिएट सिंड्रोम बोला बिकॉज इट वाज सीन इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ. व्हाट इज दिस डिलेड onset of polyneuropathy in organophosphorus group of poisoning? See, what happens is this is seen in 4 to 6 weeks post exposure. Involves bigger and bulkier muscles of body. Most common are lower limbs, and it is an ascending kind of muscle paralysis seen in Guillain-Barré syndrome. So similar kind of ascending paralysis is seen in GBS post organophosphorus exposure. This will be seen in people who have had moderate or at least moderately to severe or severe kind of an exposure. Okay, the reason may be complete suppression of cholinesterase enzyme. The patient got admitted, was treated well, and once the patient is out of danger and is recovering well, the patient will be discharged back to his life so that he can go back to his life. And after discharge, how much amount of cholinesterase has been regenerated, it is not checked. So if the regeneration of the cholinesterase is not up to the mark, this patient who goes back to his life will start to move around, because he has to earn his livelihood or do all the basic activities. But the regeneration of cholinesterase is not up to the mark. It's not that cholinesterase are absolutely suppressed, but उनका regeneration up to the mark नहीं है. So वो जितनी muscular activity करेगा उतनी ज़्यादा उसको weakness लगेगी. And because these people who are sent back to their lives, they need ambulation, उनको चलना फिरना पड़ता है,
तो जितना वो चलते हैं उतना ही उनको पाँव में थकान लगती है, एंड दैट द मोर देयर लिम्ब मसल्स गिव अप, एंड टिपिकली दिस पेशेंट कम बैक 4 to 6 weeks later and they complain that they have got no power to walk, and this kind of a paralysis which is gradually ascending upwards because of the faulty regeneration of cholinesterase enzyme is called as delayed onset of polyneuropathy in organophosphorus poisoning, seen typically 4 to 6 weeks in patients. Okay, chaliye, so this ends our talk today. Remember, you can contact me at Telegram app, जिसका लिंक है livedaily.me/neetpg, and also remember this interface is provided to us by Unacademy, and Unacademy is unparalleled when it comes to any kind of web based preparation for exams, और अनअकैडमी का नीट पीजी प्रोग्राम भी अनपैरेलल्ड है। ये आपको मिलता है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन में, जो कि है अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, lots and lots of benefit of plus subscription, like live classes, interactive classes, polls and leaderboards, test series and analysis, live doubt clearing sessions. But one more wonderful approach is that Unacademy tends to have multiple teachers even for a single subject, so the student is not bound to be following a single teacher and his concept and his way of learning. Student can follow different teachers for different topics for the same subject also. किसी के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, किसी के समझाने का तरीका डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है। सो वो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है अनअकैडमी में, जो और कहीं नहीं मिलता। सो बेसिकली इट्स अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, नॉट अ टीचर और एन इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। आप ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूशन के चॉइस ऑफ टीचर से ही पढ़ोगे। ओके, यू नेवर नो, आप किस टीचर से इन्फ्लुएंस हो जाओ एंड देन उसके पढ़ाने का तरीका आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही कहा कि आप स्पेशल क्लासेस में देख सकते हो। कीप वॉचिंग फॉर द अपडेट्स ऑफ माई स्पेशल क्लासेस विच आर कमिंग वेरी सून, विद इन 3 or 4 days। आप जाकर के देखो, आपको डेट्स दिख जाएंगी वहाँ पर। We are holding up 2 special classes in the upcoming week. Recall questions, NEET के recall questions forensic medicine में, and AIIMS के recall question forensic medicine में पिछले कुछ सालों के, वो क्लास लाइव अटेंड कीजिए and decide for yourself how does Unacademy portal looks like, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी होगी जिस तरीके से Unacademy की प्लस की प्रिपरेटरी क्लास होती है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस लेते समय ध्यान रखिएगा, आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड एंड डाउनलोडेड दी ऐप इन योर फोन, यही तो एक तरीका है। या दूसरा तरीका है कि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो तो अनअकैडमी की साइट पे जाकर के वहां पर अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए, बस दैट्स ऑल। दोनों में से कोई एक तरीका, either you need to download the app or you need to create a login ID. After you have done both, simply go to manage goal section, जहाँ पर सारे गोल्स लिखे हुए हैं कि आप कौन सा एग्ज़ाम आपका गोल है। सो अगर एग्ज़ाम आईआईटी है तो आप आईआईटी में जाओगे, अगर एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हैं तो यू कैन सिलेक्ट दैट गोल, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एंड देन देयर आर so many other exams, but your goal would be NEET PG, so you'll be selecting NEET PG. After you've selected NEET PG, simply select plus for subscription and then select the tab to get subscription. Okay, once you press the tab to get subscription, आपके सामने वेरियस सब्सक्रिप्शन के ऑफर्स आ जाएंगे। मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं, यू नो 3 मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं, एनुअल, सेमी एनुअल, एनुअल, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस के मौके रहेंगे आपके पास। द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफर्स आर 12 months and 24 months. Go for them.
they come with maximum subscription benefits in terms of money. And not only that, आप पूरे सीजन के लिए कमिट हो जाओगे और आपके टीचर्स को पूरा टाइम मिलेगा आपके लिए क्लासेस कंडक्ट करने का. आपका बैच पूरे सीजन में एक टाइम बाउंड फैक्टर में आपकी प्रिपरेशन होने वाली है. ओके. एंड दूसरी चीज़, जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे, यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ डॉक्टर सुमित लाइव. दिस विल गेन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट फॉर यू. और वो मनी you can pay in parts, you can pay via debit and credit card, you can pay via EMI और UPI payments. So money payment के portals बहुत सारे available हैं. जो आपके लिए suitable choice है वो आप ले सकते हैं. अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लास्ट मोमेंट क्लास की शॉपिंग नहीं करनी, क्लास हंटिंग नहीं करनी, वो ये चाहता है कि मैं जब अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन चालू करूं, मेरे पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए, मुझे कहाँ से बिगिन करना है और लास्ट मोमेंट पे किस तरीके के रिवीजन कोर्स देखने हैं, किस तरीके के हैंड नोट्स पढ़ने हैं. तो आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन ऑफर है विच इज़ कॉल्ड एज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट होते हैं, लाइक लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, बैच कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल. ये तो आपको प्लस में मिल रहा है, वो आइकॉनिक में भी मिलेगा. बट आइकॉनिक टेंड्स टू हैव 5 मोर बेनिफिट्स विच प्लस डज नॉट हैव, एंड दोज आर, इट गिव्स यू अ प्रेप लैडर सब्सक्रिप्शन along with the plus subscription. And the benefits of prep ladder: video lectures, question bank 2.0, rapid revision course, handwritten notes, they come along with iconic subscription. So iconic subscription is a bigger package which provides you a ground of not looking to have a last minute hunting कि किस तरीके की मुझे रैपिड रिवीजन कोर्सेज चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए. एवरीथिंग विल बी अवेलेबल विद यू फ्रॉम द स्टार्ट. इफ यू वांट टू गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. It comes with little more premium as compared to plus subscription, but then referral code works there too, and you will get 10% discount on the iconic subscription also. Go and check out both the subscription offers at Unacademy. Okay, ठीक है जी. इस चैनल के साथ में प्लीज बने रहिए. आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस चैनल so that we can popularize forensic medicine throughout our country. Okay, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, इट इज DRSUMITLIVE. You can share it with anyone who wants to have any kind of subscription from Unacademy. It will land them with 10% of benefit. कल तक के लिए टाटा. नेक्स्ट कोर्स में दोबारा मिलेंगे when we will talk about few more MCQs of toxicology. Till then, take care. Bye bye. Have a very good day ahead, and please keep safe.